Afternoon, everybody. Can you please confirm, am I audible? Yes, thank you, Kaplesh. Thank you, Manish ji. So, welcome to BD Car Launcher. Today, the session would be basically on different government jobs. We have been taking these webinars and I'll be talking about banking and other examinations. A very good evening, Kushal. Nice to see you again. So, आज के सेशन में what I'm going to discuss majorly is on the various formats of government jobs when as an aspirant, probably as a graduate or an undergraduate. आज की डेट में मेजॉरिटी लोगों का फोकस है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए यार. The best job स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी की वजह से. There are certain other reasons. Pay packages अच्छे हैं. And most of us are targeting various public sector undertakings, government jobs. So आज के सेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में क्या-क्या फोकस कर सकते हैं. What could be the different formats that we could be targeting these days. उनके पैटर्न्स कैसे हैं. फिर बहुत सारी क्यूरीज रहती हैं बच्चों के दिमाग में, यार हम एक टाइम पे एक से ज्यादा सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. What could be the difference between the preparation in various sectors? So I hope we'll be able to understand all these things in the today's session and I'll be able to address each of your queries. एक छोटा सा expectation from each of you. Definitely I will be looking down to your questions and I would definitely expect you to give ask me whatever you have a doubt. Let's make this 1.5 hour, 2 hour session a very fruitful session so that you'll be able to understand various intensities that is required to prepare for government job. कोई भी doubt है दिमाग में, keep putting questions to me. But before I'll take your questions, मैं कुछ basic सा introduction ले लगा. Not only one sector, not here and there. Let's target about various kind of sections that we're looking forward for, various kind of sectors government jobs we're looking forward for. So सबसे पहले बेटे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब को डिवाइड करना चाहूँ, बेसिकली आई वुड स्टार्ट विद बेसिक एज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर. अब बहुत लोगों का टारगेट रहता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट करते हैं. अब प्रोबेबली रीजन शायद ये है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ जॉब्स आती हैं वो बैंकिंग में आई होप सबसे ज्यादा आ रही हैं इस समय एंड इनका जो कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है. ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे हैव टू कम विद जॉब्स, दे हैव टू कम विद वैकेंसीज. अभी अगर मैं लास्ट 10-12 ईयर्स को देखूं तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साल देयर इज नथिंग लाइक जॉब अवेलेबल. Mohammed, definitely I'll be going through a bilingual session. I'll be talking about both in Hindi and English. At any point of time, if you want me to converse more in English, you can let me know. I can repeat the stuff, right? But for everybody's comfort, I'll be talking in bilingual, both in English as well as Hindi. Fine. So, okay. Starting with financial sector, what I can say is we have got majorly if I'll categorize it into 3 kinds of examinations. I'm not saying these are the only ones. Definitely इसके अलावा और बहुत सारे. I'll give you a short introduction to them also. But एक बेटे मेरे पास IPPS है, that is Indian Banking Personal Services. ये हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं एक्सेप्ट फॉर SBI, उन सब के लिए एग्जाम्स जो कंडक्ट करती है वो IPPS ही कंडक्ट करती है. देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट करती है. एंड देन वी हैव इंश्योरेंस जिसमें मेरे पास बेटे LIC भी है और मेरे पास जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की सब्सिडरीज दैट इंक्लूड्स ओरिएंटल इंश्योरेंस, दैट इंक्लूड्स नेशनल इंश्योरेंस, दैट इंक्लूड्स यूनाइटेड इंडिया, सारी इंक्लूडेड हैं. डेफिनेटली बेटे अगर मैं बात करूं ये जो क्लरिकल है ये मेरे पास IPPS और SBI में बैंक की पोस्ट होती है. जो बैंक में हम लोग पोस्ट की बात करते हैं बैंक क्लरिकल हो सकता है. देन ऑफिसर रैंक जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हमें मिलती है, दैट इज द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट. एंड देन देयर आर डेफिनेटली सर्टेन पोस्ट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर. सो जब मैं बैंकिंग में बात करता हूं तो मेरे पास ये 3 पोस्ट हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है दैट इज टिपिकली टू बी अप्लाइड फॉर पीपल विद वेरियस बैकग्राउंड्स. तो स्पेसिफिकली इफ समबडी इज अ लॉयर सिटिंग ओवर हियर, डेफिनेटली उनके लिए कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट होती है विद अ ग्रेड पे इज बेटर. यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ पोस्ट इन योर ओन डिपार्टमेंट. कोई बीटेक वाला है यहाँ पे IT CSE का स्टूडेंट है, सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स. प्रिपरेशन लेवल इज ऑलमोस्ट सेम एज PO, but definitely we can have an edge of taking up a sector which probably requires my knowledge which I have gained in graduation. Fine. So clerical और PO में क्या होता है, हम लोग कोई भी स्ट्रीम से हैं, ग्रेजुएट हैं, we can apply. But definitely when it comes to specialist officer, we can have MBA marketing, MBA finance people applying for it. We have law graduates applying for it. We have IT professionals applying for it. And definitely अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है तो AFO की पोस्ट निकलती है बेटे, एग्रीकल्चरल फीड ऑफिसर, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है. यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर देम. सिमिलरली इंश्योरेंस मेरे पास LIC और GIC हैं. GIC अगेन आई से हैज 4 सब्सिडरीज.
उनमें बेटे जो पोस्ट होती है वो क्लेरिकल जो पोस्ट होती है उनको असिस्टेंट की पोस्ट बोल देते हैं, और जो ऑफिसर्स की पोस्ट है उनको एओ और डबल एओ बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन एलएसी एंड जीआईसी. So again, that is a target that few of the people are definitely looking forward for it. Vijayalakshmi, if you're from agriculture, engineering background, definitely AOFO is one of the good options that you can look forward for. Agricultural field officer, banking में बेटे AOFO के papers अलग से भी निकलते हैं, and then you can definitely look forward for options like आपके अपनी state exams बहुत सारे papers निकालते हैं, जैसे food civil supplies के papers होते हैं depending on the state that you're looking forward for. Then definitely there are posts as agricultural officers in most of the states, right? You can look forward for Food Corporation of India FCI की post आती हैं. So definitely at here and there, definitely we have people who can look forward for various posts and keep applying for all of them. Fine. So I'll be coming down to the specific areas, specific stuff that you can ask me. Definitely I would be answering all those. Fine. So that is the first introduction. I'll be going down to the more details of each of them, and then I will be definitely taking your queries side by side. At any point, if you want to ask me anything, you can keep putting up your chats. Fine. Okay. So if I look down to the second section as a whole, I would say major of the people would be looking forward for SSC, Staff Selection Commission. अब इसके बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टारगेट एरिया रहता है. इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस हमें पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, we are expecting this exam to probably they're probably coming up with a notice in this month only. It's a huge hype that has been right now these days. So we can expect CGL, combined graduate level, to come in next 1 month. We've already had the notification for CHSL, and then there is a CPO. Again, मैं फिर इसकी डिटेल में आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? So that is the second sector. अगर मैं कहता हूँ मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बेटे एक तो देखो हम सबको पता है यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो गजेटेड पोस्ट दे रहा है, ठीक है? But then the preparation level for UPSC is probably entirely different. बट अगर कोई कहता है कि मुझे यूपीएससी को फोकस नहीं करना है, तो यस, नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग डाउन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज डेफिनेटली टू एसएससी. Why I'm combining these programs is because the preparation level, I would say, would match somewhere between SSC and banking. Definitely UPSC, the preparation level would be entirely different. Fine. So what I can expect is कि हम लोग अगर preparation के point of view से देख रहे हैं, so preparation में yes we can expect कि just give me a second, guys. There are certain people who are waiting in the room, so I can admit him. Sheikh, I hope we have already added him. Fine. So that is the second examination that we would be talking about right now. The preparation level, yes, would be gonna be almost same as banking. Definitely, I'll be coming down to the topics that we need to definitely prepare extra for SSC and look at the different preparation strategy for banking. But that is probably the second exam that we can look forward for. Fine. CGL, definitely it is the eligibility is graduation. CHSL is +2, again graduation. So CHL is group D post, whereas group B and C would be CGL. Next beta, many of you would be probably targeting RRB, that is Railway Recruitment Board. Preparation level, again almost same as if you are prepared for SSC and banking, you are automatically prepared for RRB. The major examination NTPC was a much hyped job because in 2019 they came with almost like 40,000 vacancies in NTPC only. Guys, just give me a second. Simran, yes, UPSC is a little different. Union Public Service Commission का जो major paper होता है बेटा, that is top for the post like we are targeting up IRS, we're targeting IAS, we're targeting IES, we're targeting IFS. Clerical post in SSC is definitely different. I'll be coming down to the brief introduction of what are the different posts available in CGL. ठीक है? अगर एक common sense में अगर मैं example में बहुत commonly अगर हम समझाया जाए किसी को, so जैसे मैं income tax department की बात करता हूँ, because definitely optional in UPSC, I'll come to that also. अगर मैं समझा रहा हूँ यूपीएससी और एसएससी का फर्क, तो अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सपोज बात करता हूँ, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसमें आप लोग अगर बात करें वांट टू बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर और थिंग्स लाइक दैट, सो ऑब्वियसली बेटे वी आर टारगेटिंग यूपीएससी बिकॉज दैट आर गजेटेड पोस्ट. बट जब आप सीजीएल की बात करते हो तो यू विल बी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, that probably in the span of 5 to 7 years you could be posted to income tax officer. So वो गजेटेड पोस्ट नहीं है, नॉन गजेटेड पोस्ट है. एसएससी में एक ही गजेटेड पोस्ट है, that is CAG. I'll be coming down to the details also later on. Fine.
विकास जीएस ऑप्शनल नहीं बेटे, यूपीएससी में ऑप्शनल नहीं होता जीएस. प्रॉब्ली जीएस इज द मेजर प्रोपोर्शन दैट यू हैव टू प्रिपेयर व्हेन इट कम्स टू योर यूपीएससी. यूपीएससी में सीसैट जो होता है, दैट इज द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज इन द क्वालिफाइंग नेचर. पर जो आपको मेरिट बनती है प्रीलिम्स में, वो सिर्फ जीएस के बेसिस पे बनती है. एंड यस, इफ आई लुक डाउन टू मेंस आल्सो, मेंस में भी जो मेजॉरिटी आता है दैट इज इन अ वे जनरल स्टडीज ओनली. Definitely there's a list of subjects that you can definitely come to us and we can definitely have a detailed discussion in the UPSC session for that. Fine. Okay. The third section that probably I personally believe people should be looking forward for, I'm not saying everybody, but yes, defense is one option that we can always go and look in for the option. But we're talking about defense because we already had the notification for FCAT. The exam is going to be conducted in February now. They've already come up with the notification of FCAT, so start looking forward for defense as an option. So if you believe that you have that caliber of getting into the defense, you believe you can get into army, you can get into air force, you can get into navy. Yes, we have 3 examinations that would be conducted for defense in our country. Most of these examinations would be conducted twice a year. And yes, if you're a graduate or an undergraduate in your final year, you can go and apply for defense as an option. And when you're applying for these examinations, the first post that you'll be getting is the post of lieutenant. And that pride of joining the defense services of our country would always be there, along with all the other benefits that the defense people get in our country. Akhtar, I'll come down to the definitely the essay writing and everything later on. But most of the time, when you come to the essay writing part of SSC CHSL, most of the time the essay writing would be checking your basic language skills and the basic knowledge of what is happening across the world. So could be probably in terms of the social factors, any current policies that has been issued by the government. It could be talking about certain journal factors, the decisions that has been taken. They probably most of the time would avoid any political debate or anything that is something require a particular knowledge of field. So very journal, a social topic, which are of importance to the economy, to the structure of the country as a whole. Right? So if you probably have been into reading habits, you have been reading newspapers, editorials, especially if you can follow Hindu or Indian Express, you probably would be very easy for you to understand and write essay writing in CHSL. Right? So just check your basic language abilities, along with your basic knowledge of what is happening around you. Fine? Chalo. So I'll be shortlisting it now. I'll be talking about sector by sector. I'm dividing this session into now 4 parts, talking majorly in terms of what you can look forward for a particular sector. Uske exam mein kya kya aata hai. And definitely, bete, you can keep asking your question and I'll be answering each of your questions side by side. So let's start with banking as a sector first, because that is one area where I would believe maximum of the people would apply. This is one area which has a fixed calendar, which always will come up a job, and one of the most reliable sector in terms of the job opportunities that our country is posting right now. Fine. So इंश्योरेंस में बेटे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा था मेरे पास कुछ एग्जाम्स हैं. So shortlist is almost all the examination here. SBI के clerical और PO, then I have IPPS clerical and PO, then IPPS का बेटे specialist officer है. IPPS RRB stands for regional rural banks. Fine. Now you can see most of these examination has graduation as an eligibility criteria. So if you are probably looking down for any of the post in financial sector, banking or insurance, most of the examination would give graduation as an eligibility criteria. So you probably needs to be graduate, either a final year student, but only if the exams come in the last month. So you have to be a proper graduate in that case. Fine. Sure. So that is the thing, bete. In terms of the age requirements, most of the examinations would have 28 years as the age limit for clerical. And if you're applying for the officer post, you can understand we can apply till the age of 30. Now, those who are probably in your final year and still looking down for preparation, I would believe, yes, the preparation of banking would normally require a preparation of around 6 months. Fine. So if you're in an utmost need, you've already filled for an examination, yes, you can put up an extra effort and probably can prepare in 2 months, 3 months. But what I believe, what I normally suggest, a good preparation would require a preparation of 6 months. Fine. So anybody who is sitting here as a final year student, not eligible right now, but yes, you can expect these examinations to again come in the month of June, July onwards.
So start preparing as soon as possible so that by the time of April and May, you'll be graduating. You are totally prepared, and then you can start taking mocks and everything, and you're probably prepared for that. As far as interviews is concerned, we have interviews only in case of officer ranks. So definitely you can look forward for कि मेरे पास जितने भी PO और officer ranks के पेपर हैं उन सब में interviews हैं. बाकी everywhere you'll have a preliminary section and a main section. उसका distribution कैसा होगा बेटा? I'll be coming down to that also. But थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ बिकॉज बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि मेरे को कितना सैलरी मिलेगा, मुझे बैंक में जाना क्यों है. सो डेफिनेटली पहला जो फैक्टर रहता है वो सैलरी है. जब हम जॉब को टारगेट करते हैं, मेरा सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है कि मुझे ऑप्शन सैलरी कितना मिलेगा. अब आई होप कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैंने ये रेंज क्यों लिखी है तो सारे ऑफिसर स्केल 1 एसबीआई के. ये जो रेंज है बेटे, दैट वुड डिपेंड अपॉन द सिटी दैट यू आर पोस्टेड इन, एंड that is also dependent upon the kind of variations that they keep in year to year. कुछ cost to company का factor होता है, but definitely जो major factor change रहता है that is HRA, your house rent allowance. That means if you are employed in, let's say, probably a city which has more than 50 lakhs of population, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, तो वहाँ costly cities हैं, HRA ज्यादा है, तो आपका जो pay structure है वो higher side पे रहता है. वहीं if you are in a tier 3 city, probably in a town, you're posted in a town where the structure of the examination, the cost of living is low, आपका salary package थोड़ा low रहता है. So cash in hand अगर मैं देख के चलूं तो almost would be like 60-70,000 if you're starting as an SBI officer scale 1, which is definitely a good option to begin with. Fine. शायद this is one of the reason कि सबसे बड़ा target जो होता है लोगों का वो SBI होता है जो इस field में आते हैं, जो banking को target कर रहे हैं. So SBI is one of the major target that most of the people would be looking forward for. I hope कुछ लोगों ने already form भरा हुआ है. We already had the form for SBI PO to be conducted in the month of January. So a good motivation, you can start earning a good salary probably at the age of 22-23. So people who are fresh graduates or people who have already had an experience of 2 to 3 years wanted to shift down to a new scale, definitely this is one of the targets that I would suggest you to go for. Prepare for 4 to 5 months, have a sincere, dedicated preparation for it, and definitely you will be able to clear that exam. Similarly, IPPS officer scale 1 assistant manager की post होती है. Pay packages would range in this, depends upon the banks, would slightly vary from bank to bank as well as from city to city. And then these are the clerical posts you can start applying for. Clerical के case में एक advantage रहता है if you're applying for clerical and getting your examination clear. Most of the time clerical में जो आपको एग्जाम मिलता है पोस्टिंग वो आपका होम टाउन मिल जाता है. So that is probably the advantage that few of the people would consider in terms of clerical, because इसमें state quota होता है, आपकी state के accordingly आपकी selection होती है. It is not on the basis of national level. So बहुत ज्यादा chances होते हैं that you get probably your state and at times you get also your hometown. And 99% girls के case में hometown is the preference that they give. So अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा PO नहीं clear हो रहा है, so definitely clerical becomes a very good option to begin your career and to get yourself settled with a good job, because बाकी benefits जो है that would always remain there. So अगर मैंने कुछ shortlist करूँ and want you to motivate to get down to some jobs in banking sector, I would say definitely these are the benefits that all government sector jobs will have. And the best part is जब हम government job की बात करते हैं तो layoff के chances बहुत कम है. बहुत लोगों का complaint रहता है private sector में layoffs बहुत ज्यादा है. Fine. Definitely, Simran, I'll be guiding. You can always put your messages in the journal chat box. Nandini, पहले your doubt is BSc Biotechnology can be bank job is any compulsory? No, बच्चे. नंदिनी, आपका डाउट था कि बेटे मैं बैंकिंग जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो नंदिनी उनका कंडीशन ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है विद 50% मार्क्स, और कहीं कहीं तो 50% भी एलिजिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है. सो प्रैक्टिकली बच्चे अगर आप किसी भी फील्ड से हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, इंजीनियर हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, you can always apply for banking, and yes, they are more than open to everybody. Fine. So don't ever think about कि मैं नहीं कर सकता हूँ. I'm applicable. Yes, start preparing for it. Final year में हो तो definitely you can apply next year. Fine. सिमरन, आपका डाउट था कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ. प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे मैं हमेशा एक बात पे स्ट्रेस करता हूँ. देखो, probably if you have not attended my sessions before, I always say बैंक को प्रिपेयर करने के लिए मैं बैंक वर्ड से ही हमेशा समझाता हूँ. That should be my preparation strategy. So let me give me
2 minutes for this preparation strategy, then I'll be coming down to the patterns and all. One thing that I always stress is your basics. See, I always say there is no shortcut available in any competitive examination as far as hard work is concerned. So please try to understand, मुझे smart work with hard work important है. अब वो मेरा स्मार्ट और हार्ड वर्क क्या है, मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. बेसिक्स में बेटे मेरे को 4 सेक्शन है, मैं डेफिनेटली उस पे आ रहा हूँ. दैट इज माय क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज. बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग रख रहा हूँ. मेरे जो 8th to 10th क्लास के लॉजिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज गोना बी अ टाइम प्रेशर. हमें ऑलमोस्ट 1 मिनट भी नहीं मिलता है, लेस देन 1 मिनट मिलता है टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. So what does this mean कि अगर मेरे basics थोड़े भी weak and I'm not very clear how to exactly attempt the question, definitely it becomes a great problem for me. Right? Just a second, guys. Guys, so sorry. There was some disturbance because probably we are facing a Bandh in Punjab. I am from Punjab. So there was a farmers protest going over in the Punjab. So I have to take my class from the home. So sorry for the interruption. अच्छा, so I was talking about the basics that we need to work on. Basics के केस में बेटे what we was telling is कि मेरे जो logics हैं वो बहुत strong करने हैं. अब I always suggest people join something. See, if you're preparing on your own, good enough, but then you need a proper guidance. बहुत सारे shortcuts होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसे tricks होती हैं जिसमें हम questions को fast बना सकते हैं. Because my ideal target is solving like a question in 40-50 seconds. So जब आप बेसिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, हर चैप्टर के की नोट्स बनाने जरूरी हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट राइटिंग डाउन समथिंग. यू आर फॉलोइंग अ बुक, यू आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू समथिंग. अगर आप क्लासेस लगाते हो तो एडवांटेज क्या है कि आप क्लासेस में आप लोगों को हर चैप्टर के ऊपर कुछ ट्रिक्स बताई जाती हैं. डेफिनेटली वी डिस्कस अराउंड 20-25 क्वेश्चन दैट यू कुड एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन और टाइप ऑफ ए क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन. So you definitely work a lot on your basics in that sense कि आपको किस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए था, कहाँ LCMs यूज करने हैं, कहाँ परसेंटेज फ्रैक्शंस यूज करनी है, किस क्वेश्चन के लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है. Definitely if you want to have a better look at it, you can go down to our site on YouTube. You can search for Google. We have certain videos available on YouTube and other sites also. So you can definitely have a look at the kind of structure that you need to prepare for. Fine. So that is my first area कि मैं अपनी रेगुलर क्लासेस लगा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ. बिकॉज एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट बच्चे अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 4-5 months you need to probably work on that. Next step definitely would come for your application. अब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई से इज विल गिव यू बुक्स. अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली वी आर गिविंग यू ई बुक्स. अपने क्लास एक्सरसाइजेस लगा लिए, अपने शॉर्टकट्स नोट कर लिए, अपने डाउट्स ले लिए. Then definitely we'd ask you to apply that in the e-books, because of e-books में क्या होगा, there will be a different questions. Now you need to probably set a time limit for yourself and understand कि क्या मैं उस questions को एक look में easily कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. Fine. Then third most important point for me is nurture. Nurture means अब बेटे मैंने books भी solve कर ली, अपने notes बना लिए, अब मेरा problem आता है टाइम का. सो मुझे क्या करना है, ऑनलाइन अकाउंट में जाना है जो आपको सीएल की तरफ से मिलेगा. ऑनलाइन अकाउंट में हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट होंगे. फाइन. दिस इज द स्टेज दैट प्रोबब्ली यू हैव टू डू आफ्टर अ मंथ और सो, जब आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बेसिक प्रिपरेशन हो गई है. अब मुझे लगता है कि मैंने परसेंटेज का यूनिट प्रिपेयर कर लिया है. मैं वांट टू टेस्ट क्या मैं 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन निकाल पा रहा हूँ. मेरे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करने हैं विच आर डेफिनेटली विद द टाइमर, with the same interface what you can expect in the actual examination. यहाँ पे मेरे पास टॉपिक टेस्ट होंगे, यहाँ पे मेरे पास फिर सेक्शनल टेस्ट होंगे. फाइन. डेफिनेटली बेटे मैं जीके साथ साथ कर रहा हूँ. इसके साथ साथ मैं आपको उसी चीज पे आने लगा था कि मुझे अपनी जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करनी है. अब जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली बेटे एक तो हम क्लासेस में आपको रेगुलरली पढ़ा रहे हैं विद सर्टेन टेक्निक्स कि हम किस तरह से चीजों को याद कर सकते हैं. बिकॉज जब हम स्टोरी क्रिएशन से कुछ लॉजिक्स के साथ जीके करते हैं तो दैट इज इजियर वे टू रिमेंबर जीके आल्सो. देन डेफिनेटली विल कीप गिविंग यू जीके के बेटे मंथन्स. एवरी वीक विल पोस्ट अ जीके पीडीएफ इन योर ऑनलाइन अकाउंट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
किस किस तरह से क्या क्या चीजें याद रखनी है. Then again we'll have topic test of GK available in your accounts. Fine. So that is the thing that we can go with. Simran, just give me a second. Sir, I have booked but not attended class. I want to attend some of your webinars. We want to attend daily classes by you. But definitely we keep coming up with webinars, Simran. You can have a schedule on our site, aspiration account पे जाकर आप बात कर सकते हो बच्चे. And definitely we have many more webinars coming up talking about the different sessions, different things. Okay. And if you want to join classes, they are also available in e-mode also, in the virtual mode also. We keep coming up with various discounts at various point of time. So cost factor is kept very low for most of the students at most of the time. Right? So you can talk. You can always go to careerlauncher.banking webinar. Okay, and you can talk to Chandan sir if he can share his number also, or probably he can give you a call. So that Chandan sir has already shared number, Simran. So you can talk to him for further clarification on various kind of things that is available. Fine, Simran. Okay, chalo. So I was talking about the strategy and Simran and everybody else. The last stage I always say should be your kickoff, no mocks. What we'll do is at the end of the day, I'll also tell you what are all the offerings that we want to give you. But definitely we would expect every examination, before taking the examination, you have to take mocks. So we'll be coming up with almost like 80 mocks available for various sections for you guys, right? That is the way that we probably would believe you to prepare for, fine? So moving forward, that is one thing that I wanted you to share the kind of pattern that these examinations would have. I forgot to write insurance also. So even if you're preparing for LIC or GIC, the pattern of preliminary part, the stage 1, tier 1, kuch log bolte hain isko, would be like, we'll be having reasoning, we'll be having quantitative ability and English. See, the problem is going to be your time. So we need to focus a lot on our basics. We need to understand all the short tricks, all the logics, fine. So that is the way we'll have to work, because we need to score something like this. And what we can expect, a cutoff of around 60 to 75, depending upon the examination. So understand the kind of idea that I expect you to work on. In 60 minutes, after a negative marking of 0.25, every question carries +1 and minus 0.25. So very important, after no guessworks, nothing is possible. So after the negative marking, we need to score something in this range depending upon the examination. EO ka paper de rahe ho, so I could expect a cutoff of around 60 to 63. Whereas preparing for clerical, as some states would cross even 70. And abhi RRB ka paper hua, regional rural banks ka, out of 80, we're expecting a cutoff of around 77. So the kind of preparation that you people require is definitely on the higher side. So start working a lot for your examinations, right? This is the pattern that we can expect in pre. Means we're gonna add journal awareness, fine. Again, the number of questions would definitely increase and the difficulty level would also increase. Out of 200, what I can expect a good score of around 100. Fine. Almost the same pattern when it comes to PO. The focus would be rather on data analysis rather than numerical aptitude in this section. Fine. So ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्री की प्रिपरेशन की बात करते हैं या सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन की बात करते हैं. अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विद माय ओन पर्सनल वर्डिक्ट, आई ऑलवेज से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, बिकॉज जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप प्री के लिए बहुत स्ट्रांग हो, और हो सके तो कुछ पीओ के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर योर पीओ, योर क्लरिकल वुड साउंड वेरी सिंपल. सो मैं मेरा प्रिपरेशन लेवल बैंकिंग को लेके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, so that I'll be able to probably handle all the examinations, whether it is RRB, whether it is the other publics. At times you get certain banks coming up with their own examinations, you have cooperative banks coming up. So prepare in a way so that you can handle all the papers that will probably come over. Fine. Anything that you want me to address in banking, because I'll be shifting up to SSC now. Anything that you want me to address in banking first? टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे जो रहता है वो रीजनिंग में मेरे पास ज्यादा पजल्स आती हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हैं. इंग्लिश में मेरे पास आरसीज वगैरह हैं. विजयलक्ष्मी, एएफओ में जो बेटे मेजर रहता है दैट इज गोना बी योर टेक्निकल नॉलेज ओनली. फाइन. So probably the whole of the part is going to be from your agriculture, what you have studied in your 4 years of graduation. Fine. So uska definitely you can go down to our side, or you can go down to AFO main side, and you can look down to the syllabus that they have. Fine. Pre mein definitely you will have the other sections, you have the aptitude paper, but mains is going to be totally your technical knowledge.
Okay. Kaplesh, this is one question that people keep asking me, and I says, if you are preparing for your CAT, definitely you are 70% prepared for your banking and your SSC examination. I would say 70%, not 100%. देखो बेटे, जब मैं CAT की बात करता हूँ, CAT का I understand the level of verbal they expect in CAT is definitely is on the higher side, especially when it comes to reading. But then there are certain areas where probably we don't touch in CAT. So logically अगर समझो तो बेटे हमारे पास जब हम इंग्लिश की बात करते हैं बैंकिंग एंड एसएससी, we have error spotting, error detection, we have close passages coming up also. So जब आप लोग CAT की बात कर रहे हो तो आप लोग अपना ग्रामर पे और क्लोज वगैरह पे नहीं स्ट्रेस कर रहे हो. So you have to stress over here. Secondly, जब आप CAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो LRDI का सेक्शन आता है उसमें आप अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड रीजनिंग पे फोकस करते हो. जबकि बैंकिंग के केस में या एसएससी के केस में हमारा फोकस जो है दैट इज मोर ऑन पजल्स. सो जो वहां पर आप लॉजिकल रीजनिंग या अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करते हो, दैट इज प्रोबेबली रिक्वायर्ड मोर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एसएससी एंड बैंकिंग इज कंसर्न्ड. देन यू नीड टू प्रिपेयर अ बिट फॉर योर विजुअल रीजनिंग आल्सो. कुछ और टॉपिक्स होते हैं जैसे सिंबल नोटेशन हो गया, डिडक्टिव लॉजिक हो गया, वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं. Quant, I would say yes, you are 90% prepared. If you are preparing for your CAT, you are prepared for your banking and SSC also. But general awareness is one area that probably CAT people will not touch, so you have to do that also. So I would say you are prepared 2/3 of the syllabus. You need 1/3 extra effort if you wanted to go for CAT, MBA. And one major thing बेटे, CAT वाले बच्चों को टाइम प्रेशर की हैम्बर नहीं होती है, टाइम लिमिट्स का बहुत फर्क है. वहां पे you are getting almost like 1 hour for a section. This year definitely it was 40 minutes because of COVID. But वहां पे 1 घंटे में we are expecting to you to solve 20-22 questions. But here in 1 hour we are expecting you to solve 75-80 questions. So that strategy would change. Fine. Basics would remain same, but yes, you need to really strategize your preparation. विनायक, आपका क्वेश्चन था हाउ टू क्लियर कट ऑफ फॉर बैंकिंग एंड ऑल प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन. विनायक देख बेटे, इसका आंसर मैं फिर वही दूंगा. इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है बच्चे. देखो, जब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, आई अगेन स्ट्रेस बेसिक्स का मतलब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं. सबसे पहले स्पॉन्टानिटी. क्या मेरा ऐसा प्रिपरेशन लेवल है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही पता है कि मैं इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम अपनी क्लासेस लगाते हैं बेटा, हम बहुत स्ट्रेस करते हैं इस चीज पे कि आप पैटर्न्स को नोटिस करो क्वेश्चन के. डेफिनेटली आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है. देयर इज नो लुकिंग बैक कि आप मुझे टेबल नहीं आते हैं, मुझे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स नहीं आते हैं, मुझे स्क्वायर नहीं आते हैं, मुझे वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स नहीं आती है. नो, यू कैन नॉट से नो ऑन एनीथिंग लाइक दैट. मेरा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए. बट यस, आई वुड से दिस कैलकुलेशन वुड बी रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस. रेस्ट 80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस मुझे काम किस पे करना है, अपने बेसिक्स पे. तो जैसे मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करता हूँ, मैं टीएससी के चैप्टर की बात करता हूँ, तो मुझे पास बहुत सारे ऑलमोस्ट आई वुड से देयर आर 10 to 12 की पॉइंट्स दैट आई हैव टू रिमेंबर टू क्रैक दैट चैप्टर. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं. क्या मुझे वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स क्लियर हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनिंग है, हम पजल करते हैं. बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है पजल्स के साथ, कैसे भी स्टार्ट कर लेते हैं. देयर इज नो प्रॉपर अप्रोच टू टारगेट अ पजल. बट यस, we cannot expect you to go around random basis. हर क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर अप्रोच है. उसको उसी तरीके से किया जाए, उसी मेथड से किया जाए तो बेटे दैट वुड गिव मी द आंसर इन द स्टिपुलेटेड टाइम. So when I'm expecting you to solve a puzzle of 5 questions in 3 minutes, definitely there has to be certain techniques behind it. Otherwise एक एवरेज बच्चे को उसी के लिए 6 to 7 minutes लग रहे हैं. तो विनायक और everybody else, please understand you have to prepare it well. You cannot look forward for a technique कि मैंने आज 15 दिन मेहनत की, मैंने कुछ भी randomly किया और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा. Yes, the probability of clearing that examination would be only 0.01%. 99% पेपर उन्हीं का क्लियर होगा जो बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने हर चीज को क्रिटिकली लिख रहे हैं, जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. हर क्लास के बाद, हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद प्लीज हर चैप्टर के की पॉइंट्स लिखने शुरू करो. कोशिश करो. I as a person initially prepared for CAT. Fine. So I prepared for CAT probably now 18 years back.
The only thing probably I always share with everybody that the best part was I was making my notes very clearly and I never used to write anybody else's language. I always used to put everything in my own words. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चैप्टर के की पॉइंट्स को अलग से प्रिपेयर करो, ठीक है विनायक. इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फ्रॉम समवेयर, अगेन आई वुड से डेफिनेटली गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. I don't know obviously the kind of faculty that you are following over there, but if you're preparing from Bankers Adda or somewhere else, please make sure बेटे कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और ये देख पा रहे हो कि क्या उन नोट्स के बेसिस पे आप अपने प्रॉपर शॉर्टकट्स अप्लाई कर पा रहे हो, कि आपके जो 90% क्वेश्चन है वो स्टिपुलेटेड 1 मिनट में कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. फाइन. सो प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन दैट बेसिक फंडामेंटल्स बेटे. इफ यू फील दैट देयर इज सर्टेन लुकिंग बैक, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका उतना अच्छा प्रिपरेशन लेवल नहीं हो पा रहा है, आपको अपने डाउट्स लेने हैं, आपके डाउट्स नहीं हो पा रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर एन अल्टरनेटिव. बट प्लीज डोंट ट्राई टू सेव योर टाइम इन योर प्रिपरेशन राइट नाउ. फाइन. Malapurna, अपना बच्चा का you got disconnected from webinar बेटे, there must be an issue at your end in that case because कुछ नेट का issue होगा, so need to work on that. Fine. Anything else that you want me to address in banking? Because then I wanted to shift to SSC and other examination. I want to give an introduction to them also. Okay, chalo. So I'm moving down to other parts. Let's have a small introduction to SSC. What we can expect in SSC here. अच्छा, एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं काफी जगह पे, सो स्टार्ट रीडिंग. जीके इंप्रूव करनी है, प्लीज बेटे इफ पॉसिबल स्टार्ट रीडिंग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड इफ पॉसिबल इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल इन योर टाउन, you can go for Hindustan Times. Fine, but start reading editorials, get a good concept of that. Okay, coming down to staff selection commission. I hope थोड़ा बहुत आइडिया है एसएससी करते क्या है. एसएससी की बेटे अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है. सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी बेटे क्या कर रही है, जितने भी गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, could it be revenue departments, could it be home ministries, could it be defense ministries, postal officers, जितने भी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट्स हैं, उसको जो गजेटेड पोस्ट है वो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, और बाकी सारे जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है दैट इज टू बी फिल्ड थ्रू एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है. अब ये बेटे मेरा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये 3 तरह के एग्जाम्स ले रहे हैं. फाइन. एक एग्जाम जो है मेरा दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इज वन ऑफ द मेजर टारगेट्स एज मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एट अ ग्रेजुएट लेवल. तो अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, वो भी प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर इस पेपर को फिल कर सकता है. सो दिस इज वन एग्जामिनेशन दैट यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. Expecting the notice to come in next 1 month. So please, if you are still doubtful, have not started with your preparation, start your preparation so that probably if this examination would come in the month of February or March with tier 1, you should be ideally prepared by that time. Please guys, एक चीज हमेशा suggest करूंगा, stop waiting for them to come with their notification. See, when they'll come with their notification, they're going to give you 45 to 50 days to prepare for that examination. But I don't believe that would be the sufficient time for the right preparation. So if you're still not started with your preparation, start working for it so that probably if you can expect this exam to happen in February or March, you have ideally 3 to 4 months for your tier 1, another 45-50 days for your tier 2, giving yourself 5-6 months so that you are confident enough कि आप paper clear कर पाओगे. Fine. But definitely this is one thing. I'll be coming down to the post that would be available over here. सेकेंड, अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डेफिनेटली दिस इज अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. एंड थर्ड, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको कुछ पुलिस सर्विसेज में जाना है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एयरफोर्स में नहीं सिलेक्शन हुआ, बट यस आई वांट टू सर्व माय कंट्री इन टर्म्स ऑफ पुलिस सर्विसेज. जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे पास दिल्ली पुलिस है, जिसमें हमारे पास आईएसबीएफ है, वहां पे इंडियन तिब्बतियन है, आई बी कमिंग डाउन टू दैट आल्सो, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बेटे, आप लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो कम विद पुलिस सर्विसेज के एग्जाम्स. ज्यादातर स्टेट्स में बेटे सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम्स निकलते हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल इज ऑलमोस्ट सेम एज एसएससी सीपीओ. तो अगर आप सीपीओ के लिए प्रिपेयर हो तो please keep looking down for your examination notifications coming for sub inspector and other posts for your states also.
99% of the time states would not come with a different syllabi, so you can definitely come and prepare for them also. Fine. थोड़ा सा बच्चे मैंने एक स्ट्रक्चर सा लिख के दिया है आपको, बिकॉज काफी लोगों का डाउट रहता है कि हम लोग जब एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा सैलरी पैकेजेस क्या रहेंगे। बेटे यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो सीएजी है ये सबसे ज्यादा टारगेट में रहता है, बिकॉज यहाँ पे बेटे मेरे पास जो पैकेज है वो सबसे ज्यादा है, प्लस ये गजेटेड पोस्ट है। इनके लिए एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे बेटे मेरे पास जो अकाउंट्स ऑफिसर है इनके लिए एक अलग पेपर होता है इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का, ठीक है, विच वुड बी कंडक्टेड आफ्टर योर टियर 1। बाकी सबके लिए बेटे कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, विल हैव टियर 1 एंड टियर 2। फाइन। So if you want to have a look, these are the kind of packages that you'll get in hand after all your HRAs and your DRAs, everything, okay? So including everything, you'll be getting a kind of a salary packages over here like this in SSC. Fine. These are the other posts that is available. Definitely, Bhavna, I'll be coming down to the study plan for SBPO because we expect that to happen in next 1 month. Definitely at the end of session, I'll give you a complete study plan for that. फाइन। अच्छा, यहाँ पे बेटे वी अंडरस्टैंड मेरे पास एक ही डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर पोस्ट हैं, कुछ असिस्टेंट्स की पोस्ट हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपका रैंक कितना रहता है, उसके हिसाब से बच्चे हमारी एलोकेशन होती है, बिकॉज व्हेन दे विल अप्लाई फॉर एसएससी दे आस्क अस टू गिव अ काइंड ऑफ अ प्रेफरेंस ऑफ द काइंड ऑफ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। फाइन। सो ऑब्वियसली जितना हमारा रैंक बेटर आएगा उतना हमारे को बेटर पोस्ट मिलती है, और अगर हमारा रैंक थोड़ा नीचे आता है देन वी ऑब्वियसली हैव टू सेटल डाउन फॉर पोस्ट व्हिच आर असिस्टेंट पोस्ट इन द सेम डिपार्टमेंट। फाइन। then gradually you can again reapply and can get down to the post, or gradually you can with your work experience can get down to the officer rank. Fine. ये बेटे CHSL की कुछ पोस्ट हैं जो हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट्स में मेरे पास लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आती है। पोस्टल असिस्टेंट्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। These are the posts that you can apply even if you're not a graduate or just completed your +2, you are eligible to apply for your CHSL because the name itself which is higher secondary level. Fine. इसके बाद बच्चे जो मैं CPO की बात कर रहा था, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना है, so these are the posts that is available under them. इसमें से बहुत लोगों का टारगेट दिल्ली पुलिस रहता है, that is the first preference that most of the people would give because यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कैडर में आपकी पोस्टिंग होती है और ज्यादातर आप दिल्ली में ही रहते हो, सो डोंट हैव टू गेट डाउन टू द रिमोट एरियाज। बाकी केसेस में बेटे वी अंडरस्टैंड है बीएसएफ है, चाहे सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है, हर केस में वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बीइंग शिफ्टेड प्रोबब्ली टू अक्रॉस द कंट्री। फाइन। बट यस, इफ यू वांट टू सर्व इनटू पुलिस, इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ आर्मी बट इन द अदर फॉर्मेट ऑफ इन इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स ऑफ द कंट्री, डेफिनेटली वन एग्जामिनेशन इज दिस। यहाँ पे एक और एग्जामिनेशन की बात करूंगा बेटे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट होता है। सो कोशिश करो अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हो, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सीपीओ जैसा ही होता है। सो इसका भी जब पोस्ट निकलती है यू आर ग्रेजुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फाइन। उनका पेपर अलग से कंडक्ट किया जाता है, सो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हो, आप सीएल में हो, तो डेफिनेटली विल बी कीप telling you of all the notifications that would be coming up day to day, fine, and you can keep applying or looking down for various plans, fine. Okay, benefits would always remain same, banking हो, central government हो, definitely हमारे को बेटे इंटरेस्ट रेट्स लो रहते हैं, कोई भी लोन वगैरह लेना है, all our medical facilities would be taken care by government, so God forbids if any of us get ill or if any of our dependents gets ill, definitely whole of these benefits would be there in terms of central government, ठीक है। हमारे पास एचआरए हमेशा रहता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, और काफी पोस्ट में तो बेटे हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एकोमोडेशन मिलती हैं। लीव ट्रैवलिंग कंसेशन वुड ऑलवेज बी देयर, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। गवर्नमेंट ऑलवेज आस्क अस कि हम एवरी 2 to 3 years वी कैन गो ऑन द प्लान फॉर अ वेकेशन ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, सो दीज ऑल थिंग्स वुड ऑलवेज बी देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर सेफ्टी, सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इन योर जॉब, ले-ऑफ्स नहीं है, pays regularly revise होती रहते हैं with the pay commissions, fine, and we always get all the benefits that a central government definitely would have, fine. So these are the structure of the examination that you can expect. You can have a look at the question thing. SSC में बेटे मेरे पास CGL में 3 tiers हैं। Tier 1 में मेरे पास क्वांट, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग आएगा,
और टियर 2 में बच्चे मेरे पास जो आता है दैट इज ओनली क्वांटिटेटिव एबिलिटी ऑफ 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स ऑफ इंग्लिश। तो अगर किसी का फोकस एसएससी है और मुझे लगता है मुझे सीजीएल में जाना है, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनना है, ऑडिटिंग में जाना है, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स में जाना है, तो ऑफिसर पोस्ट डेफिनेटली बेटे दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू फोकस। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बच्चे जो मेरा सबसे ज्यादा प्रिपरेशन लेवल रिक्वायर्ड है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे है, बिकॉज इन अ वे आउट ऑफ माय 600 मार्क्स जो मेरी मेरिट बनाने वाला है उसमें से 250 मार्क्स की मेरी इंग्लिश आने वाली है और 250 मार्क्स का मेरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी आने वाला है। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर एसएससी मेरा फोकस है तो मेरा फोकस इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे रीजनिंग नहीं करनी है, बट यस इसकी रीजनिंग इज कंपैरेटिवली इजियर देन बैंकिंग। और यहाँ पे जो जर्नल अवेयरनेस आती है उसमें बच्चे मेरा जो फोकस रहेगा वो करंट जीके पे रहेगा और थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी आना है। सो ऑल डिपेंड्स कि आपका बेसिक्स कितना अच्छा है, बट मेजर फोकस कोशिश करो इस पे करो, वी हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन इट। थोड़ा सा बैंकिंग और एसएससी में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या रहेगा, बेसिक्स दोनों में आने हैं। बेसिक्स इन द सेंस मेरे जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं क्वांट में, लाइक आई वुड से परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, रेशियोज एवरेजेस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, वो हर एक में आता है। बट जब आप एसएससी सीजीएल की बात करते हो स्पेसिफिकली, नीड टू वर्क ऑन योर ट्रिग्नोमेट्री, नीड टू वर्क ऑन योर ज्योमेट्री, algebraical identities, fine, your questions on heights and distances. So थोड़ा सा अगर मैं अपना 10th क्लास का मैथ समझूं वो मेरे सीजीएल का फोकस रहता है। So मैं आपको वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे भी आऊंगा कि अगर किसी ने दोनों प्रिपेयर करने हैं तो कैसे प्रिपेयर करने हैं। बट यस मैं फिर बोलूंगा अगर आप डिपेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ अगर एक एग्जाम देख रहे हो एसएससी, तो डेफिनेटली हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज होगा। बट अगर मेरे को एक मेजॉरिटी एग्जाम्स देखने हैं, सो आइडियली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अभी के लिए ये रख सकते हो कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो इंग्लिश, वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वो रीजनिंग, तीनों सेक्शंस में कॉमन रहेगा। अगर मैं एक जर्नल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से चल रहा हूं तो मेरा टियर 1 ऑलमोस्ट सबका प्रिपेयर्ड है। देन टियर 2 के लिए डेफिनेटली यू कैन लुक डाउन फॉर सेपरेट वर्कशॉप, सेपरेट क्लासेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ सेपरेट प्रिपरेशन फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 days to 45 days. Fine. So SSC CGL definitely this is the focus. अगर आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हो तो बेटे उसमें मेरे पास एक ही टियर है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस में बेटे तो मेरे पास सिर्फ ऐसे राइटिंग आना है 100 नंबर का। सो मेजरली जो मुझे प्रिपेयर करना है वो यही प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें यही है। सीपीओ के केस में बेटे अगेन वी हैव द सेम 4 सेक्शंस। डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीजीएल वुड बी लिटिल हायर देन द अदर टू, बट इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा अगर हम लोग सीजीएल को फोकस कर लें, इफ वी कैन प्रिपेयर वेल फॉर सीजीएल, वी आर डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर सीएचएसएल, वी आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर सीपीओ, सो वुड बिकम एन इजी जॉब फॉर मोस्ट ऑफ अस, टू नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो अगर अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या यू आर नॉट इन द फाइनल मोड ऑफ टेकिंग दैट एग्जामिनेशन, आप प्रिपरेशन करो तो सीजीएल की प्रिपेयर करो, प्रिपेयर फॉर इट, डेफिनेटली वुड बिकम एन इजियर जॉब टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस आल्सो। फाइन। और इसके साथ साथ मैं फिर बोलूंगा आपको फायदा क्या होगा अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर्ड हो। 90% of your state examination, because states would be coming up with examinations now in the next 2-3 months. They probably would be coming with the post of patwari, they definitely would be coming with the post of revenue departments, their food civil supplies, they'll be coming up the post of various municipal corporations, district court, high courts में जितनी clerical auditing post होती हैं उनके लिए vacancies निकलती रहती हैं। अगर आप अपने सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो माइंड माय वर्ड्स, यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल नॉन गस्टेड पोस्ट फॉर योर सेंट्रल गवर्नमेंट्स आल्सो, योर स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो। Ample number of vacancies coming in each of the state governments these days. Look forward for them also, target them also. The preparation is almost same when you prepare for a CGL and banking, so I can bet on that a person who is prepared for CGL and banking, except for UPSC gusted post, you are prepared for every state government, you are prepared for all jobs. So overall banking और CGL को prepare कर लो बच्चे, सब कुछ prepare हो जाएगा। Fine. So this was something about SSC. Okay. Anybody who wants to ask me? So sorry over here.
Any question that you want to ask me over here, bete, regarding SSC? Any particular examination, any particular thing? Okay, I want you to interact a little bit more. ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, probably nobody is responding. So I hope everybody is connected. Any plan, anything that you are not clear, anything, any slide that you want to watch again? Okay, expecting थोड़ा बहुत clear है. मोहम्मद बेटे, एसएससी सीजीएल का कट ऑफ डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट को टारगेट कर रहे हो. थोड़ा सा अगर बच्चे मैं टियर 1 की बात करूं तो टियर 1 के केस में जो हमारा कट ऑफ रहता है वो नॉर्मली 130 टू 140 रहता है फॉर एग्जाम ऑलमोस्ट ऑल दी पोस्ट एक्सेप्ट फॉर दी सीजी पोस्ट. ठीक है, जो हमारे ऑडिटर जर्नल की पोस्ट होती है, जो मैंने आपको कहा था गजटेड पोस्ट है, उनके लिए जो कट ऑफ होता है वो अराउंड 160 प्लस रहता है, जिसके बाद आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का पेपर देना पड़ता है. Otherwise, बेटे preliminary tier 1 में मेरा कट ऑफ you can expect it to be 130 to 140. Tier 2 के बाद बच्चे जो मेरा कट ऑफ रहता है वो अराउंड आउट ऑफ 600 मार्क्स जो मेरा रहता है, that would be around 430 to 440 for all the posts which include the assistants also, and I would expect 470 480 for the post of something like जो आपके ऑफिसर कैडर्स की पोस्ट होती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और डिफरेंट सेक्रेटरीट्स में. फाइन. भावना, अगर आपको एसएससी के लिए जीके प्रिपेयर करना है बेटे, आई वुड से एक तो बच्चे अपनी करंट को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज दैट इज वन एरिया दैट प्रोबब्ली वी रिक्वायर इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन. ठीक है, सो अगर आप करंट प्रिपरेशन की बात कर रहे हो तो मेरे पास लास्ट 6 मंथ्स का जीके सबसे इंपॉर्टेंट है. अब जब मैं जीके की बात करता हूं तो एक चीज को समझ के चलो, करंट जीके डजंट मीन ओनली रिमेंबरिंग व्हाट हैज हैपेंड. व्हाटएवर इज रिलेटेड टू दैट करंट जीके वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. Kaplesh, Lucent is good if you're targeting only static GK. Understand the idea. आज की डेट में अगर मैं देखूं तो most of the examination is not looking down for the deep knowledge of your static GK. Even UPSC has stopped doing that. What has become more important is कि suppose मैं कहता हूं मेरे पास राम मंदिर का इशू रहा. Let's not get into that controversy, so that is a controversial topic. But if something has come around a verdict with, let's say, Ram Mandir, everything related to the history of Ram Mandir, everything related to the geographical facts of Ayodhya and the district that it belongs to, everything related to the past of that also becomes important. So अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्स का पैटर्न समझने की कोशिश करो तो जो चीजें करंट में यूज हो रही हैं, हमारे पास डेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, बॉर्डर लाइंस इंपॉर्टेंट रहती हैं, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज वो करंट में भी डिस्कस होते रहते हैं. सो अगर आप अपनी जीके प्रिपेयर कर रहे हो, कोशिश करो एडिटोरियल्स पढ़ो, हेडलाइंस ना पढ़ के उनकी डिटेल्स पढ़ो, बिकॉज उससे रिलेटेड जो चीजें वो इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स से अभी मैं कह रहा हूं कि पीछे डिस्कशन चल रही थी कि हमारा जो जीएसटी है उसका शेयर स्टेट के साथ कैसा रहना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो. यू शुड बी एबल टू नो कि उसमें फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होगा, उसमें होम मिनिस्ट्री का क्या रोल होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल होगा, उसमें डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, उसकी अब एक करंट डिपार्टमेंट्स में किसकी कौन सी पोस्टिंग है, मेरे पास फाइनेंशियल सेक्रेटरीट में कौन बैठा है, होम सेक्रेटरीट में कौन बैठा है, यूएनओ का इशू चल रहा है तो यूएनओ के वो कौन से डिपार्टमेंट से, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे. ऑल सच थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए बेटे हम लोग आपको मंथन देते हैं, जो हम जीके की क्लासेस भी लगाते हैं. वी डोंट कम विद अ काइंड ऑफ एमसीक्यूज ओनली, we ask you to read those articles. Classes में भी बेटे जब हम करंट जीके करते हैं, so we pick up a topic and then we'll discuss everything related to that topic in terms of geographical aspect, economic aspect, in terms of the historical aspect related to it. That is what you need to do right now. So stop targeting basic books. You want to do it, go ahead. I'm not denying कि उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता, but yes, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला जो स्ट्रेस है should be on reading a lot. अपना जर्नल अवेयरनेस इंप्रूव करो. आज की डेट में बेटे जीके नहीं आता है, जर्नल अवेयरनेस आता है. सो दे डोंट एक्सपेक्ट मी टू रिमेंबर कि अकबर की मम्मी का नेम क्या था, ठीक है, या मेरे किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कहां पे क्या किया. करंट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे. सो out of 25 question, I would expect 15 to 20 question from a journal awareness of something related to current. So let's work on that first. I hope Anluka, Bhavna, okay? ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ो, कोशिश करो कुछ
प्रिपरेशन साइट्स पे जाओ, सीएल में अगर हो बेभावना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मंथन्स को रेगुलरली फॉलो करो। हम आपको जीके निंजा भेजते हैं जिसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं, फिर उसके बाद उसको फॉलो करो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी हम रेगुलरली शेयर करते हैं, प्लस अगर आप क्लासेस में हो तो डेफिनेटली बेटे वो भी हो जाएगा। चंदन सर ने बेटे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा है, हो सके तो उसको ज्वाइन करो, बिकॉज उसमें रेगुलर जीके अपडेट्स होते हैं which gives you a very good edge to test your knowledge। तो बेटर आइडिया क्या है कि मैं अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, एडिटोरियल पढ़ा, फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जब वही चीज सामने आई तो इट्स अ गुड रिवीजन, जब मुझे याद आ गया हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, these are the important things that I've already remembered or I could probably work on them। Comfortable बच्चे? Okay, I hope I have not missed up any question। Okay, चलो, so that was majorly on SSC। बेटे चंदन सर ने आपको YouTube का लिंक भी भेजा है। YouTube लिंक में फायदा क्या होगा बच्चे, if you can subscribe to that, we have certain videos available over there। कुछ पुराने वेबिनार्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो भी अटेंड कर सकते हो, प्लस यू कैन अटेंड सर्टेन डेमो क्लासेस आल्सो ओवर देयर, सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए द वे वी टीच यू, जीके हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्वांट हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू वांट सर्टेन मोर डेमो सेशंस, यू कैन टॉक टू चंदन सर फॉर दैट रीजन, ही कैन गिव यू मोर डेमो सेशंस। We'll be coming up with the new batches every day here and there, so we have already planned up a new batch coming up on 14th, so you can have the links for that with Chandan sir also। Fine, चलो मूविंग ऑन, थोड़ा सा आरआरबी को डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज काफी लोगों का वो भी फोकस रहता है। बेटे आरआरबी में मेरे पास एनटीपीसी इज द मेजर एग्जामिनेशन दैट मोस्ट ऑफ अस वी वुड बी टारगेटिंग फॉर, ठीक है। इसमें मेरे पास दो तरह की मेन पोस्ट है। जो पहली पोस्ट है बेटे दैट इज अंडर ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, +2 पास हो, तो आप क्लेरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बेटे मैंने यहाँ पे इनिशियल पे लिखी है, इसका आफ्टर योर एचआरए एंड एयरलाइंस अलाउंस would turn out to be around 27,000। So अगर आपको ऐसा लगता है कि somebody is not a graduate and want to start with some government, तो मेरे पास रेलवेज में क्लेरिकल पोस्ट होती हैं जिसका जो बेसिक पे है वो 19,900 है, प्लस ग्रेड पे डाल के एयरलाइंस अलाउंस डाल के कैश इन हैंड वुड बी अराउंड 27,000। फाइन, इन पोस्ट के लिए बेटे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, उसकी वेटेज नहीं है, बट यस आपको बेसिक अपनी टाइपिंग स्पीड मेंटेन करनी है अगर आपको क्लेरिकल पोस्ट के लिए जाना है। फाइन, इसके बाद बच्चे आपको जो नेक्स्ट पेपर मिलेंगे दैट इज ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। इसमें भी बेटे यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आपका जो टोटल पे है वो इनिशियल पे 25,500 है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी दैट यू आर पोस्टेड इन एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट एन इंक्रीमेंट ऑफ अराउंड 40% इन द सैलरी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एचआरए एंड डीआरए। सो हमारा जो नेट पे आता है वो तकरीबन 40% प्लस करके यहाँ पे बेटे मेरे पास ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास आएगा। वहीं यहाँ मेरा जो नेट पे बनता है वो 39,000 40,000 के आसपास बन जाता है, ठीक है। सो अगेन अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को देखना चाहते हो, एक बहुत अच्छा रहता है। इसमें से बेटे काफी लोगों का प्रेफरेंस जो होता है वो कमर्शियल अप्रेंटिस का रहता है, बिकॉज दीज आर प्रॉब्ली द पीपल जो खासकर कमर्स बैकग्राउंड के, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा मैनेजमेंट को देखना है, मेरे पास गुड्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, थिंग्स कैसे जा रहे हैं। सो कमर्शियल अप्रेंटिस इज वन थिंग दैट यू कैन प्रॉब्ली लुक फॉरवर्ड फॉर। Most of these jobs are rather the officer guard job, officer rank jobs, ठीक है, that is where they're paying you good also, so that could be one target for most of the people। And yes, the number of vacancies coming up is huge, so railways I understand is the biggest recruiter in the world। Fine, our Indian Railways is one of the biggest recruiter in the world, so definitely that could be a good target for most of you people जो लोग जनरल टारगेट करना चाहते हैं, want to settle down in the government sector। Fine, इसका भी बेटे एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बता देता हूँ। आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है बेटे उसमें भी टियर 1 में ध्यान से देखो तो कुछ बैंकिंग एसएससी जैसा ही है। इसमें बस फायदा ये है कि अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, देयर आर सर्टेन पीपल जिनको लगता है हर बारी मेरा बैंक में इंग्लिश ही रह जाता है, एसएससी में जाता हूँ यार मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा टियर 2 इसी वजह से रह जाता है बिकॉज उसमें 200 नंबर का इंग्लिश आता है। तो NTPC becomes a safeguard for you guys because इसमें ध्यान से देखो तो मेरा इंग्लिश आता ही नहीं है। So definitely बेटे अगर आप में से कोई भी ऐसा बैठा है जो हमेशा इंग्लिश की वजह से रह रहे हैं, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, मैं हिंदी मीडियम से था या मैं किसी और मीडियम से था and I'm not able to clear the cutoffs for English, yes, look forward for this as an examination। It's a very good option for most of you because इसके tier 1 और tier 2 दोनों में ही इंग्लिश अवेलेबल नहीं है।
फाइन. सो यू कैन अंडरस्टैंड टियर 1 में मेरे पास रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दैट इज क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस है. टियर 2 में भी यही है. और अगर कोई ऐसा है जिसने अभी एनटीपीसी देना है और ये जनरल अवेयरनेस टारगेट कर रहा है, बिकॉज दिस एग्जाम इज नाउ प्लान्ड इन दिसंबर एंड, प्लीज जीके करने के लिए इसमें साइंस पे ज्यादा फोकस करना. और साइंस में भी सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो बायोलॉजी में रहेगा. फाइन. So anybody who's looking forward for RRB NTPC stage 1 in December, prepare a lot for your science, and that too majorly biology plus basics of geography. Last 6 months का current GK मैं फिर बोल रहा हूँ हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. You have to go through regular GK ninjas. मंथन डाउनलोड करो CL की साइट से. बट प्लीज किसी भी एग्जाम को फोकस करना है जहां जनरल अवेयरनेस आ रहा है तो 6 मंथ्स का जीके करना ही करना है. कंफर्टेबल बच्चे? फाइन. सो दैट इज ऑल अबाउट एनटीपीसी. देन डिफेंस, वन ऑफ माय फेवरेट्स. आई वाज नॉट एबल टू क्लियर डिफेंस. एसएसबी में रह गया था व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन. बट yes, this is one area that I feel most of the people would be has the most pride joining it. ठीक है. इसमें बेटे एफकैट मैंने नंबर 1 पे क्यों लिखा है? बिकॉज वी ऑलरेडी हैड द नोटिस फॉर दिस. तो अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा बैठा है जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और जिसकी एज 24 से कम है, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड दिस एज एन ऑप्शन. you'll be defined, you'll be getting a post in एयर फोर्स. अब एयर फोर्स में बेटे हमारे पास 3 तरह की पोस्ट हैं. हमारे पास यहाँ पे बेटे फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है. तो मैं इसमें थोड़ा सा आ रहा हूँ. पहले मैं चलो इसी से स्टार्ट करता हूँ. इसका जो पेपर है एफकैट का बच्चे, उसका स्ट्रक्चर ये है. सी वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर. लास्ट ईयर जो बांटा रहा उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के कम थे, रीजनिंग के ज्यादा थे. देयर कुड बी सम प्लस माइनस हियर एंड देयर. ऑलमोस्ट जो मेरा पैटर्न है वो ये रहेगा. इक्विटी बेटे जो है दैट इज इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट. अगर आप टेक्निकल फील्ड के लिए टारगेट कर रहे हो तो अगर यहाँ पे कोई इंजीनियर बैठा है जो सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या सीएससी में है, उसमें बेटे स्पेसिफिक पोस्ट आती हैं जब आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो अगर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एफकैट क्लियर करके एयरफोर्स में है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड यस यू बी इन योर फील्ड. और अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए डेफिनेटली एडवांटेज होता है कि आपका कंपटीशन लिमिटेड रहता है. एसएसबी में टेक्निकल नहीं पूछा जाता है, फॉरगेट अबाउट इट. सिर्फ टेस्ट आपको एक अलग से आएगा जिसमें आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट की जाएगी. लिमिटेड पीपल अप्लाई फॉर इट, सो इट्स अ वेरी गुड फोकस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल लुकिंग फॉरवर्ड एज एन इंजीनियर टू अप्लाई फॉर एफकैट. और जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनके लिए बेटे मेरे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं. डेफिनेटली आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर वुड इंक्लूड ओनली दीस 4 सेक्शंस. इन 4 सेक्शंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका एक एसएसबी राउंड होता है. ठीक है, वो आपका होगा. एंड डेफिनेटली इफ यू कैन क्लियर दैट राउंड यू वुड बी इन द एयर फोर्स. फाइन. जो दूसरा मेजर एग्जाम रहता है वो सीडीएस रहता है. जितने भी ये बेटे सीडीएस आर्मी की अगर मैं बात करूं, मैंने एक आर्मी का एग्जांपल लेके किया है. जब आप सीडीएस या एफकैट क्लियर करते हो तो आपको सबसे पहली पोस्ट जो मिलती है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है. And probably I can expect you to retire as a general, as a major general or a lieutenant general. ठीक है, if you are in the permanent commission. इसमें भी 2 तरह की कमीशन होती हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक परमानेंट कमीशन है. तो अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, so definitely बेटे you're retiring as a general is a big pride for most of us. big pride. Fine. पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं, बेनिफिट्स ऑब्वियसली भी अंडरस्टैंड आर्मी के कंपेरेबल नहीं है. आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवल है, तीनों के कंपेरेबल नहीं है. ठीक है. सीडीएस का पेपर भी बेटे कुछ ऐसा है. इसमें मैं फिर एक चीज समझाना चाहूंगा. आईएमए, आईएनए और एएफए, इनके लिए बेटे ये तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं. बट अगर किसी का मैथ्स वीक है तो आप ओटीए के लिए जा सकते हो. ओटीए के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. ये पेपर सीडीएस कंडक्ट करता है. ठीक है. एंड डेफिनेटली बेटे द प्रिपरेशन लेवल इज ऑलमोस्ट सेम इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सीजीएल. Comfortable बच्चे? Okay, so that was the major introduction that I wanted to give you for most of the examination. थोड़ा सा मैं आपको अपना बता देता हूं. अगर आप सीएल के साथ हो तो सीएल के केस में बेटे what we are going to give you is almost like 200 to 250 hours of teaching.
अगर आप ईक में हो, वर्चुअल क्लासेस में हो, तो वर्चुअल क्लासेस में आपको इतने मिलता है। नॉन वर्चुअल क्लासेस में हो तो डेफिनेटली बेटे हमारे पास ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। यू कैन गो टू द रेस्पेक्टिव सिटीज एंड टेक दैट, but definitely if you have certain constraints regarding going to the sessions, we definitely have your e-sessions with us. You can join us virtually in our e-classes. इसमें बेटे हमारे पास जीके के लिए अलग से सेशन चलेंगे। उसमें बेटे हमारे पास हर हफ्ते करंट जीके का सेशन रहता है। So we'll be covering up the GK of that week every week. प्लस मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जीके के लिए हमारे पास मंथन रहेगा। मंथली जर्नल अवेयरनेस की आपको मैगजीन बना के दी जाती है जिसमें पूरा पीडीएफ होता है। रेगुलर बेटे आपके पास जीके निंदाज आते हैं, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। सो यू आर वेरी डेफिनेटली वेरी कॉन्शियस कि आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, करंट एज वेल एज स्टैटिक। फाइन। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा रहता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक वी हैव 60 सेशंस that is initially focused on your basics, that would be clearing your basic fundamentals for SSC, for banking, for NTPC, everything. Because हमें पता है कि बेटे कुछ टॉपिक्स जो है वो सबके लिए कॉमन है। You have to almost prepare the same for everything. So definitely we'll be working on your fundamentals for almost like 60 sessions in the beginning. हर सेशंस के बाद बच्चे डेफिनेटली we have strategy sessions, we have doubt clearing sessions. We'll be keeping up extra sessions every here and there for every doubts. ठीक है? We'll be taking your doubts from your online accounts. We'll be taking your doubts from your class sheets, from your ebooks. And in any case, if you have been solving some other material and want to come back with doubts, definitely more than welcome. We'll have a doubt clearing session for them also. इसके बाद बेटे definitely we offer you mock test. Mock test से पहले बच्चे मैं फिर टेस्ट करूंगा ऑनलाइन अकाउंट में। टॉपिक टेस्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने क्लास शीट सॉल्व कर ली, बुक्स कंप्लीट कर ली, बट देन वी नीड सर्टेन थिंग विद टाइमर। तो हर टॉपिक के ऊपर टॉपिक टेस्ट है। आपको सर ने बेटे देखो यहाँ पे लिंक एक शेयर किया है। यू कैन हैव अ वर्चुअल लुक टुवर्ड्स वन ऑफ द, यू कैन गो टू द एस्पिरेशन अकाउंट। ठीक है, आप गूगल पे थोड़ा सर्च करके यहाँ पे जाके aspiration.ai पे आप लोग एक वर्चुअल ले सकते हो टूल टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ ई अकाउंट दैट वी आर गोना गिव यू। फाइन। उसमें बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल रहेंगे। विल मेक श्योर कि जितने भी मॉक्स आ रहे हैं, जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, विल गिव यू एम्पल नंबर ऑफ मॉक्स फॉर योर प्रैक्टिस बिफोर दैट। एंड डेफिनेटली विल हैव कंप्लीट स्ट्रैटेजी सेशंस फॉर एवरी मॉक। What should be a right strategy for it? We'll have complete analysis of it same, गिविंग यू एन आइडिया कि किस तरह से इस मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए था, इसका कट ऑफ क्या रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सो डेफिनेटली गोइंग फॉर दैट। हमारे पास ई बुक्स रहेंगी, विल बी ऑफरिंग यू ई बुक्स। अगर आप ई बुक स्ट्रक्चर में नहीं हो, वर्चुअल क्लासेस में नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में हो, डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड यू विद दी हार्ड कॉपीज आल्सो। हर टॉपिक के ऊपर क्लास एक्सरसाइजेस हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटे, नॉट ओनली बैंकिंग एंड एसएससी, जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स हैं। Because we understand there are certain things that you probably need to do extra for every examination. So suppose abhi koi bacha SBI dene ja raha hai, so we are definitely conducting some special classes on puzzles because we understand SBI ke liye puzzles would be little more tough. We'll be conducting classes for data interpretation. So there are 4 sessions planned separately for data interpretation, looking specifically for the kind of probationary officer में जिस तरह की DI आती है। We'll be giving you new patterns of coding, symbol notation, deductive logic. We'll be giving you extra classes for data sufficiency in PO. We'll be definitely coming with sessions on banking and economic awareness. There are 6 sessions planned on them, specifically required for SBI PO. Similarly, बेटे जब SSC है उसके लिए कुछ exclusive workshops हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन है, हाई लेवल ज्योमेट्री कैसे टारगेट करना है, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज को कैसे देखा जा सकता है, विजुअल रीजनिंग करनी पड़ती है, क्यूब्स के क्वेश्चन है। सो सेपरेट वर्कशॉप्स फॉर द सेपरेट थिंग्स दैट वी कुड एक्सपेक्ट टू अकर इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फाइन। टेस्ट जिम्स रहेंगे। टेस्ट जिम कुछ नहीं है बेटे, टॉपिक टेस्ट है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस अवेलेबल वुड बी मोर देन 2000। फाइन। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी आर गोना डेफिनेटली गिव यू। अब बेटे आपके डाउट्स, दैट इज व्हाट वी आर गोना ऑफर इन जर्नल। अब आप पूछो बच्चे जो आपको पूछना है, गिव मी योर क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक।
Would be expecting few questions from your side. Anything that you want me to bete look forward for? किसी भी एग्जाम के बारे में want to ask me for any other examination that probably I have not covered and you want me to talk on that also? Anything, any distribution in the exam, preparation strategy, anything that you are not clear you want me to address towards? Nandini, I believe आज की डेट में बेटे most of the fields are little safe for girls. हाँ, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि आपको अपने होम टाउन में रहना है, that could be a little issue. Definitely बेटे होम टाउन के केस में ज्यादातर अगर आप इंश्योरेंस को टारगेट करो, my experience is इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादातर गर्ल्स को होम टाउन दे दिया जाता है. So whether you are in the post of AO or double AO or assistant, आपको नॉर्मली होम टाउन मिल जाता है. बैंक के केस में अगर मैं बात करूं तो क्लेरिकल पोस्ट ज्यादातर होम टाउन दे देते हैं. ठीक है. अदरवाइज बेटे अगर आप एसएससी में हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में हो, नो डाउट आई एम नॉट इंसिस्टिंग कि आपको होम टाउन मिलेगा, बट यस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यस दे आर वेरी सेफ जॉब्स. फाइन. आज की डेट में बेटे आई वुड नॉट पर्सनली रिकमेंड यू सेइंग कि मैं गर्ल हूं तो आई एम नॉट प्रोबेबली बी एबल टू टारगेट दिस जॉब और द अदर जॉब. Yes, at times you could be little more unsafe, feeling unsafe in targeting police as an option. But yes, CGL, banking, insurance, all very safe jobs. Fine, definitely good to target. Kiran, group D post जो RRB में होती है बेटे, that is probably the assistant kind of post. Fine. उसके बारे में बहुत ज्यादा तो to be very true, I have not searched a lot. I definitely would search a lot on that also. Definitely they come with their examination and उनका जो पैटर्न होता है उसमें I remember इंग्लिश नहीं होती है, सॉरी उसमें शायद क्वांट नहीं होता था, रीजनिंग इंग्लिश और जीके होता था. बट सो सॉरी, आई हैव अ लिमिटेड नॉलेज विद दैट आल्सो बिकॉज़ दैट इज वन थिंग दैट वी प्रोबब्ली आर नॉट फोकसिंग राइट नाउ. Definitely in my next session I'll be able to address to that also here. Anything else that you want me to share, please guys? Okay, so in that case, which I believe I hope I have served the purpose. I've given you the introduction of what kind of jobs you'll be looking forward for. Again, my take on this would be start preparing, start working hard, and most importantly, start understanding, analyzing your strengths and weaknesses. We need to make our strengths even more strong because this is the area that is going to give me easy score in less time. But then identify the patterns and identify your weakness. Please हर पेपर के पैटर्न को थोड़ा वॉच करो. ट्राई टू सी किस एरियाज पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है. ये बहुत जरूरत है बेटे कि आप उसके पैटर्न्स को समझो, उसके डायग्नोस्टिक्स दो, उसके मॉक्स दो. आप कर लॉन्चर की साइट पे जाके देख सकते हो, हर एक के पैटर्न दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है. अगर आपको और डिटेल चाहिए होगी तो बेटे हम हर एग्जाम के ऊपर आपको और वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितना आया. ठीक है. प्लीज इस चीज को समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्या था और टाइम क्या था. उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी अपनी एनर्जीज को जो है उस तरफ लगाओ. यू नीड टू प्रॉपरली स्टिमुलेट योर एनर्जी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. फाइन. आइडेंटिफाई शॉर्ट ट्रिक्स इन एवरी क्वेश्चन. ट्राई टू लुक डाउन फॉर इट. What could be the right approach to solve that particular question? Work on them. Give yourself 3 to 4 months. Don't try to look forward for a shortcut कि मैं 15 दिन में कुछ कर सकता हूँ. In terms of devotion of time, I always say it's one of the question. Depends आप क्या कर रहे हो. अगर आप इस समय free हो, for certain reasons you have not joined your job in your graduation final year, probably not attending colleges, I would say ideally like something like 5 to 6 hours per day on an average of 20 to 25 hours per week could be good. Fine. Those people who probably I would say it's a good time. For those who are starting up with their preparation, for those who have already prepared a bit, obviously can reduce this time. Fine. So those who are relatively free can devote 5 hours per day. But on an average, what I expect out of you is to devote 20 to 25 hours per week. That comes out to an average of 3 to 4 hours per day. Comfortable बच्चे?
So I hope, thank you, Bhavna. I hope I served the purpose. We'll be coming up with more webinars. Okay, so you can keep joining us. You can give us a feedback also. Any other particular thing that you want us to address, you want the next webinar to be on, we're more than happy to come for the same, and definitely would love to interact with you guys. Thank you so much for the day, guys.